So, okay, good afternoon to all. And today is again very important class. So, in the last classes, the module 2, that is the resonance series and the parallel, also the bandwidth Q factor and the relation between the bandwidth Q factor. So, and some numerical problems are completed. Now, today the topics will be the mutual coupled circuit. Okay, mutual couple and dot conventions in coupled circuits, then equivalent inductance, analysis of mutual coupled circuits, and ideal transformer. So, module 2, that is the last topic of the module 2. So now we are just going to start the class. So everyone know the self inductance, mutual inductance, basic terms of the self inductance. What is inductance? What is the unit of inductance? What is the mutual inductance? Means where suppose two coils, then there is the coupling of the flux. There is the leakage flux, self linkage flux. So these are the things. So when we just talk about the mutual coupling, mutual inductance, then the transformer basic principle, that is the mutual inductance. So now I think my voice is clear or screen is also visible. Rahul Kumar, screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, Or sir, Yes, sir, visible. visible. okay, and my voice is also clear now? Yes, Yes, sir, sir. also clear. Okay, so all of you concentrate in the class. So today class, that is the coupled circuit. So here, so all of you mute your microphone. Analysis of coupled circuit. Okay. So magnetically coupled circuits. So electric network, that is the flux, linkage of flux. So first term, that is the self-inductance. What is self-inductance? First self-inductance, then mutual inductance. So वन by वन करके जो है कि मैं वन टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा पहले, देन हम लोग कॉपर सर्किट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So self inductance. So I think all of you know this term, very basic term, self inductance. So you know that when suppose a current changes in a circuit, then what will happen? The magnetic flux linking the same circuit changes and an EMF is induced in the circuit. This is the very basic of the self inductance. Suppose any coil is there, and now in the coil that a current changes in a circuit, then what will happen? The magnetic flux linking the circuit will change, and due to this, the induced EMF, that is the self-induced EMF, is induced in the circuit. So self-inductance. So when a current changes in a circuit, the magnetic flux linking the same circuit changes, and an EMF is induced in the circuit. Just wait 1 minute.
Okay. Same circuit, that is the induced in the circuit. So this induced EMF, all of you know when there is a change in any inductor or coil, then voltage will be induced. What is the voltage? What is the EMF? So see here. All of you, I think, know that the induced EMF is proportional to what? The rate of change of current. Rate of change of current. So I think this relation is very important. D V G L by dt. V is equal to L di by dt. So what is V? This is the simple induced voltage. Induced voltage. So and L of you know that this is the constant of proportionality known as self-inductance. And what is di by dt? So what is di by dt here? This is the rate of change of current. Rate of change of current. And L is, you know, this is the basic constant self-inductance. I think so all of you know the unit of inductance, that is Henry. Okay. So these are the very basic, बहुत ही बेसिक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ही बेसिक टर्म्स है, लेकिन मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूं, 5 मिनट लगेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके, सो यहाँ F is equal to L di by dt. तो यदि बेसिक इलेक्ट्रिकल में यदि पढ़े होंगे तो इंडक्टेंस को यू नो वन रिलेशन ये भी पढ़ा होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज जितना ज्यादा करंट चेंज, यहां से एक रिलेशन है N phi by I. So N is number of turns in the circuit. What is N here? Number of turns in the circuit. And phi is what here? Phi, that is flux linkage. This is flux linkage. So ये जो V is equal to L and ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1. Now this is equation number 2. Okay, so now here simply substituting the value here, see here, V is equal to L di by dt. तो यहां से हम लोग I का वैल्यू को निकाल सकते हैं कि नहीं? I is equal to N phi by L. Okay, so simply from equation number 1, here V is equal to L d by dt, and now I will be N phi by, simply this is, okay, this is capital L. Okay, so L, now this is V is equal to L by L. We just यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट को. Now here this is d phi by dt. So L cancel out each other. So यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या? V is equal to N d phi by dt. Suppose this is equation number 3. So here V is equal to N d phi by dt. Now see here from equation number 1, we just compare this one, 1 and 3. Compare 1 and 3. तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करते तो क्या रिलेशन निकल रहा है? This is L di by dt is equal to N d phi by dt. तो यहाँ से L is equal to dt कैंसिल हो जाएगा, N d phi by di. So this inductance, this L, what this is represent the magnitude of self inductance. This will represent simply
the magnitude of self-inductance. Self-inductance, whenever there is current is flowing through the coil, then the rate of change of current. So what will be the self-inductance? मतलब सिंपली एक ही कॉइल है, उस कॉइल में हम लोग करंट यदि फ्लो करता है तो उसका जो टोटल इंडक्टेंस हम लोग का क्या हो रहा है. सो एन मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा हम लोग का इंडक्टेंस होगा. ठीक है. और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. सो दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि सेल्फ मतलब सिंपली एक कॉइल है, उसमें हम लोग का करंट फ्लो करता है, तो उसमें हम लोग का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है वो इंड्यूस्ड क्या हम लोग का ईएमएफ हो रहा है एक ही कॉइल में, वो होता है सेल्फ. जब हम लोग म्यूचुअल का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिंपली दो कॉइल लेते हैं तो आपस में सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा एज वेल एज देयर इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू द effect due to their each other, means simply both the coil, due to both the coil. So here next is mutual inductance, mutual, mutual inductance, mutual inductance. Okay, so mutual वर्ड जब बोलते हैं तो उसमें ही मतलब होता है ना कि दिमाग में समझ में आ रहा है कि अच्छा म्यूचुअल का मतलब हम लोग क्या समझ. तो यदि ऐसे भी सब कोई नया वर्ड नहीं है, प्लस टू से ही जो कि सब वर्ड का यूज होते आ रहा है, फिजिक्स में भी सेल्फ होता है क्या, म्यूचुअल क्या होता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये सब ऑलरेडी है. फिर भी मैं थोड़ा बेसिक को पढ़ाते हुए जो है कि थोड़ा इसमें जो पढ़ रहा है हम लोग का उस पर जाएंगे. तो जिस किसी का छूटा हुआ भी रहेगा तो उसको जो है कि बोरिंग नहीं लगेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल्फ क्या है और म्यूचुअल क्या है. डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते थे जो सिलेबस है. तो यहाँ पर सपोज देयर इज टू कॉइल हियर, सी हियर देयर इज टू कॉइल. सो जो ये कॉइल है, सपोज यहाँ से यदि करंट फ्लो करती है, दैट इज द I1 विल बी द करंट. नाउ फॉर दिस कॉइल दिस इज द I2 करंट. So this is the coil 1, this is the coil 1, and now this is the coil 2. तो इस कॉइल में यदि अपना बात करेंगे, अपना जो होगा सेल्फ, ये होगा सेल्फ. तो सेल्फ के लिए phi 1 1 लेते हैं अभी, ठीक है. कॉइल 2 के लिए phi 2 2 लेते हैं, ठीक है. और यदि हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब ये आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है. तो ये जो म्यूचुअल के कारण यदि हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, तो इसमें क्या हो जाएगा, phi 1 1 हो गया यहाँ पर. तो दोनों के कारण आपस में होगा, इसके कारण यदि हम लोग बात करें, इसके कारण यदि बात करते हैं तो क्या होगा, phi 2 1 is equal to phi 1 2. सो हियर N1, सपोज यहाँ पर N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इसका हो गया, एंड N2 हो गया सेकेंड कॉइल के लिए, ठीक है. तो इस तरह से यदि हम लोग का दो कॉइल है आपस में, दोनों पर यदि करंट फ्लो करता है तो क्या होगा. तो म्यूचुअल का मतलब तो यही होता है. म्यूचुअल का जो बेसिक मीनिंग है, both the two coils, the current carrying coils here, so each coil will have leakage flux. तो अपना अपना लीकेज फ्लक्स होगा. phi 1 1, जैसे हम लोग phi 1 1 का बात करते हैं, phi 1 1 and phi 2 2. And what phi 2 2? So what is this? This is the leakage flux of coil 1 and coil 2. This is leakage flux of coil 1 and coil 2, okay, respectively. Now what is this phi 2 1 and phi 2 1 or phi 2 1 or 1 2? So phi 2 1 और phi 2, इसका मतलब क्या समझते हैं.
इसका मतलब ये होता है जैसे 5 to 1, इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स ऑफ कॉइल 2, फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 लिंक कॉइल 1। इसका मतलब ये होगा, बोल सकते हैं सिंपली फ्लक्स ऑफ कॉइल, फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 लिंक्स कॉइल 1। ठीक है, और जो दूसरा वाला बात करते हैं, ये यहाँ पर और लिख देते हैं, और फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 लिंक्स कॉइल 2, ये समझना है ना। 2-1 का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स कॉइल 2 जो फ्लक्स 1 पे लिंक हो रहा है, 5-1-2 का मतलब होगा कि फ्लक्स कॉइल 1 का जो फ्लक्स 2 पे लिंक हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं इन सबको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि नोटेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट में, यदि हम लोग बात करते हैं कि इंड्यूस वोल्टेज क्या होगा कॉइल 2 पे, कॉइल 1 पे, जो भी हम लोग बात करते हैं, सपोज हम लोग कॉइल 2 का बात करते हैं, सपोज कॉइल 2, the induced voltage of coil 2, induced voltage of coil 2 is given by simply क्या होगा, तो VL2, 2 के लिए हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स N2 ही होगा, और यहां पर d∅1 का जो 2 पे लिंक हुआ है डिवाइडेड बाय dt, डिवाइडेड बाय dt। यहां पर कितना नंबर इक्वेशन तक था हम लोग के पास, 3, और इसको मान लेते हैं 4। ओके, और दिस इज इक्वेशन नंबर 5। जो भी है इक्वेशन तो अपना मन से लिखना है। So here 512 simply related to the current of coil 1 and induced voltage is simply proportional to C है। तो हम लोग इसको, अब यदि हम लोग बात करते हैं कि ये तो इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया कहां पर, इस कॉइल नंबर 2 पे, कॉइल नंबर 2 पे। ठीक है, अब फिर से यदि हम लोग बात करें कि रिलेशन करंट के फॉर्म में, कि सपोज 512 जो है, 512 फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स इज रिलेटेड टू द करंट ऑफ कॉइल 1, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस 512 is related to the current of coil, कहां का कॉइल, कॉइल 1, and the induced voltage is proportional to the rate of change of I1, so VL2 is equal to M di1 by dt. Question number 6. What is M here? What is M here? M is mutual inductance. M क्या है यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए L, M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज M म्यूचुअल, जस्ट वेट, म्यूचुअल MUTUL, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो यहाँ पर यदि 2 कॉइल है, सेल्फ इंडक्टेंस, एंड दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द 2 कॉइल। ओके, so okay, M is here mutual inductance। ठीक है, now comparing the equation 5 and 6, comparing equation 5 and 6, कंपेयरिंग 5 and 6, तो यहां से क्या रिलेशन आएगा देख सकते हैं हम लोग, VL2 VL2, सो M
di1 by dt is equal to n2 d phi 12 by n dt। क्लियर? तो dt dt काट देते हैं तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2 और d phi 12 डिवाइडेड बाय di1 ओके। सो ये हम लोग m लिख सकते हैं। तो सिमिलरली तो हम लोग नेक्स्ट कॉइल के लिए भी कर सकते हैं, दोनों का तो रिलेशन सेम ही है। तो यहाँ पर यदि हम लोग नेक्स्ट कॉइल के लिए बात करेंगे तो m इज इक्वल टू n2 की जगह n1 हो जाएगा और d phi 21 हो जाएगा और यहाँ पर di2 हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने बेसिक पढ़ा दिया हूँ, लेकिन फिर भी यदि ऐसा है कि कुछ नहीं आता है सेल्फ इंडक्टर म्यूचुअल, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी बुक या फिजिक्स का कोई भी बुक उठा करके एक बार जो है कि थोड़ा सा पढ़ लेना, तो जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? फिर भी मैंने शुरू से ही बताया हूँ कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, पढ़ोगे 5 प्रोपोर्शनल टू आई, 5 प्रोपोर्शनल टू एल आई, सब मतलब बेसिक जानता होगा कि जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा करंट, उतना करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, है ना? तो ये कुछ बेसिक जो टर्म है एकदम बेसिक, मैं उतना भी बेसिक में बेसिक इलेक्ट्रिकल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का टॉपिक दूसरा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या रिलेशन निकाला, सिंपली अभी हम लोग क्या देखें, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जब आपस में कॉइल रखते हैं, दोनों में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, सिंपली फ्लक्स का लिंकेज होगा, वो सेल्फ का कॉइल के कारण भी होगा और आपस में जो करंट होगा अदर कॉइल पर उसका इफेक्ट होगा म्यूचुअल। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपली क्या है, बायलेटरल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो है रिलेशन m इजिकल टू n2 d phi 1, तो एन एक मिनट n2 हो गया, ठीक है। तो यदि हम लोग कॉइल का यदि हम लोग बात करते हैं, क्या रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देख रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है? तो सिंपली यदि हम लोग का कोई मीडियम, मतलब एयर इज द मीडियम, हम लोग के पास कुछ भी मतलब मीडियम नहीं, मीडियम मतलब समझ में ही रहा है, एयर इज द मीडियम। हम लोग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डी फाई 12 बाई डी टी, तो यदि हम एक मिनट यहाँ पर देखो लिख रहे हैं सिंपल इस चीज को, यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या था लास्ट, 7 और 8 ना। इक्वेशन नंबर 7 and 8, suppose the coil, when the coil are linked with air as मीडियम है ना, सिंपली क्या हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, देन इक्वेशन 7 and 8 can be expressed as like m is equal to n2 phi 12 by I1 and m is equal to n1 phi to 1 by I2. Okay, so these are the simple expressions related to the mutual inductance, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं कि सपोज कॉपलिंग क्या होता है, व्हाट इज कॉपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग, एक टर्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग, ये दिस इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है कि हम लोग कितना फ्लक्स, किस फ्रैक्शन में कितना फ्लक्स हम लोग का लिंक हो रहा है कॉइल पे, दोनों कॉइल में कौन सा फ्रैक्शंस पे लिंक हो रहा है। मतलब सिंपली इसको बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स that links the coil
और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग के इसको मानते हैं, के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के। सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या बोलते हैं, के, एंड के इज इक्वल टू 512 बाय 51 एंड 521 बाय 52। सो पता ही है ये वाला 51 क्या होता है एंड 52, फ्लक्स इन ईच कॉइल, एंड 512 एंड 521 फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल्स। हाँ, और एक चीज ये भी होगा, पर ये चीज भी बहुत बेसिक चीज है कि 51 का यदि हम लोग बात करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 512 होगा ही, क्योंकि ये तो सेल्फ हुआ, ये तो लिंक हो रहा है, लीकेज का लिंक हो रहा है ना, मैक्सिमम। एंड हम लोग यदि बात करेंगे 52 तो ये भी जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 521, ठीक है। और के का जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज यूनिटी ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग के का क्या होगा, यूनिटी ही होगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब यदि हम लोग इक्वेशंस का यदि बात करते हैं, सपोज हम लोग के पास कौन दो इक्वेशंस है, 9 एंड 10, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 9 एंड 10। तो जस्ट मल्टीप्लाइंग द 9 एंड 10, मल्टीप्लाइंग 9 एंड 10, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 9 एंड 10, सी हियर, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 9 एंड 10, मल्टीप्लाई करते हैं। नाइन एंड 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एम एम इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू n1 n2 और 512 बाय I1 इंटू 521 बाय I2। क्लियर है? तो n1 n2 तो 512, सी हियर 512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K51, यहां से इस रिलेशन से यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला इक्वेशन। तो यहाँ पर n1 n2 512 को क्या लिख सकते हैं, K51, 521 को लिख सकते हैं क्या, K52। नीचे में क्या है, I1 और ये I2। ओके, सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 और k तो k और k स्क्वायर हो गया, ये n1 लिख सकते हैं इसको हम लोग, और ऐसे लिख सकते हैं क्या, 51 बाय I1 और n2 52 बाय क्या है, I2 है ना, 52 बाय, ओके। सो n1 51 बाय I1 ये क्या होगा, L1 होगा, और ये L2 होगा, ये इसका मतलब L1 होगा और इसका मतलब L2 होगा, क्योंकि L का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, L इज इक्वल टू N बाई जो करंट है, यही ना जानते हैं L का डेफिनेशन। तो यहां से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, K स्क्वायर L1 L2, और ये क्या है टोटल M स्क्वायर। तो यहां से एक रिलेशन आएगा, M इज इक्वल टू K स्क्वायर रूट L1 और ये L2, M इज इक्वल टू K L1 L2, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। M इज इक्वल टू K L1 और ये L2, बहुत बेसिक टर्म जो हम लोग यूज कर रहे हैं एकदम शुरू से, देख रहे हो ना, एकदम शुरू से जो हम लोग बेसिक यूज कर रहे हैं, VL by dt ln phi by I, जो बेसिक एकदम हम लोग जो फिजिक्स का बात करते हैं, उसी से ही मैंने ये सब जो है कि रिलेशन को फाइंड आउट किया है। बहुत ही बेसिक रिलेशन है, ठीक है, बहुत बेसिक रिलेशन, ज्यादा इसमें कोई टफ नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। क्या समझ में आ रहा है मुस्कान, यहाँ तक क्लियर है मुस्कान? यस सर। कोई डाउट है यस यहाँ सर। तक? ये कोएफिशिएंट ऑफ नो कपलिंग, सर। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को भी। प्राची कुमारी, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, हिमांशु चौहान, क्लियर? क्लियर है।